I hope all of you are doing great in your life. And yesterday आप लोग ने जैसे कि होली मनाया है एंड सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी रमज़ान टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो. So let's not wait and let's start our discussions. And today's discussion is about business versus job, and which is the best field and what are their advantages and what are their disadvantages and what are their pros and cons, and how you need to take the decisions, how you need to take the if you want to choose between the job versus business, then how you can choose between these tools, and what all analysis you need to do and how to execute the same. So regarding this all we will discuss in the today's video, and I hope you will like these videos because I'm trying some things different. And as I already mentioned that in coming days we are going to come with some unique ideas. I and my friend AK is working on it, and hopefully these are going to be the interesting ones, and this will be helpful for you all. And see, as a audience or as a young minds or as a students, if I thought about some things, I always think that from where I will get positive vibes, from where I will get a knowledge, and from where I will get a skills, that all matters for me, because I'm in that age where I can learn lot of things, can implement lot of new things, and can get the things which you want in your lives. For that you need to work hard, and that is the only way you can succeed in your life and you can achieve your goals. So this is the most important things I believe so. And it's always vary from persons to persons and how they think, and what are their thoughts and what are their observations regarding some things. And this is not developed in a one day, because it took times to develop some things. And I believe that because if you have the wills you can learn the skills, you can learn the any analysis, you can learn anything in this universe you want, because ultimate goal is that if you have will you can learn anything. So that is the most important things. So as I mentioned that आज की जो हमारी टॉपिक है जॉब वर्सेस बिजनेस है. तो ये बहुत सुनने में बहुत आसान लगता है यार, जॉब है यार बिजनेस है, बाकी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. क्योंकि बिकॉज यस्टरडे व्हेन आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल एंड व्हाइल डूइंग एनालिसिस आई केम टू नो दैट, मैंने बहुत कुछ चीज़ें मतलब उस एनालिसिस में मैंने देखा. तो इसी पर डिस्कस करते हैं. तो पहला सबसे चीज़ क्या होता है ना, कि आप इफ़ यू आर डूइंग एनी थिंग्स, सबसे पहला चीज़ है कि आप सेटिस्फाइड रहते हो कि नहीं रहते. कोई भी चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में आपको कितनी सेटिस्फैक्शंस मिल रही है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सपोज आप यदि जॉब करते हो तो वहाँ पर क्या क्या एडवांटेजेस है. जॉब करने में सबसे पहले है कि आपको सिक्योरिटी के एडवांटेजेस हैं. आपको यू विल गेट अ लमसम अमाउंट एवरी मंथ. मतलब कि आप अपना एक लिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सकते हो. आप जो चाहते हो अचीव तो नहीं कर पाओगे हर एक चीज़, बाकी कुछ चीज़ें आप अचीव कर लोगे. तो दैट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ जॉब, बिकॉज यू विल गेट अ लमसम अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, or you can buy some things. If you have the bucket, वो लिस्ट आपकी बकेट की बनी है उसमें आप वो चीज़ बाई कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, बिजनेस क्या है. सो बिजनेस मीन्स ही रिस्क है. मतलब कि द मोर यू टेक द रिस्क द मोर यू विल गेट अ रिवॉर्ड. बट बिजनेस में क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है. आपको वहाँ पर मतलब कि मनी आने का कोई मतलब सर्टन नहीं है. मतलब कि आपको यदि 4-5 months या 1 years आपके बिजनेस चल गया, देन यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर एंड अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी यू कैन अर्न. So but the thing is that first of all you need to take a risk, and that is the most important things. Many people is afraid from this and they don't take a risk. सो पहला ये चीज़ हो गया. दूसरा चीज़ क्या है कि यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, यू नीड टू थिंक लाइक अ लीडर्स, एंड you need to survey your markets, what are the products which is currently running in the markets, how to implement a new products, how to do your advertisements, how to reduce your cost,
how what to do so that you can improve your products, you can reach to more audience, your product will go to more audience. So that all things matters a lot, and ये ऐसा चीज़ नहीं कि रातों रात हो जाएंगे। तो फिर बात वही हो जाती है ना कि बिजनेस, भाई बिजनेस का मतलब ही होता है भाई अपना मन के मालिक हो, मतलब कि आप जब चाहो कुछ भी कर सकते हो, आप उसको चाहो बढ़ा सकते हो, उसको चाहो घटा सकते हो, बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि मतलब आपको रिस्क लेना आना चाहिए। सो कहते हैं ना कि रिस्क बिट्स रिस्क, चॉइस इज योर्स। कहते हैं कि ऊंचाई पर वही जाता है जिसको संघर्ष करने की आदत हो। यूं ही नहीं मिला करती मंजिल, मंजिल पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही चीज़ होती है लाइफ में, मतलब कि जॉब और बिजनेस का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। और क्या है ना कि जॉब में क्या है ना कि जैसे आप जॉब में रहते हो ना, तो मतलब कि आप एक चीज़ की तरफ बंध जाते हो। हेलो, हाय हाय हाय, कैसे हो आप कभी जॉब करते हो ना तो कोई चीज़ में आप बंद जाते हो, मतलब कोई चीज़ से आप बाहर नहीं आ पाते हो क्योंकि मतलब कि आपको जब एक लम्स अमाउंट एवरी मंथ यू आर गेटिंग, तो आप ना ब्रॉडर एस्पेक्ट पे नहीं सोच सकते। मतलब आपकी जो गोल है, आप आपके जो मतलब कि पैशंस है, आपके जो ड्रीम्स है, उसको आप नहीं सोचते हो। मतलब ये सब चीज़ें हैं आप ये सब चीज़ें हैं आप मतलब कि कुछ भी करना चाहते हो, मतलब कि वो चीज़ कर सकते हो। तो मतलब कि डैट डैट मतलब कि दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, मतलब कि वी नीड टू अंडरस्टैंड वाइल वी आर डूइंग सम थिंग्स। एंड दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है कि जब भी आप कोई भी चीज़ सोचते हो तो उसके लिए आप कितना वर्क करते हो, मतलब कि उसके लिए आप कितना मेहनत करते हो, आप उसके लिए कितना मतलब कि अपने आप को अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। और ये ऐसे नहीं आते, ये रातों रात नहीं आते। मतलब कि फॉर डैट यू नीड टू वर्क हार्ड एंटिल अनलेस यू आर अचीविंग योर गोल्स, मतलब कि दिन रात एक करना पड़ेगा। एंड यार दिस इज़ नॉट an easy task, मतलब कि for this you need a lot of guts, you need a lot of confidence, you need a motivation for that। and I know that कि nothing is impossible in this world if you have the wills। Again I will say one thing only, this is all about will, because I've learned one things from my managers, and he told once that कि if you have the wills you can learn anything in this world, because see as last moment of the day, the most important things is that will is the most important things। and I know that many of us sometimes feel that भाई ये हो नहीं पाएगा, या इफ ये चीज़ कर नहीं सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ आ जाती है। सो आप लोग का क्या कमेंट्स है, जॉब बेटर है या बिजनेस, क्या है आपका? यदि कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मतलब ये चीज़ें रिगार्डिंग। और इसके अलावा एक और चीज़ है, मतलब कि जैसे एज वी वर डिस्कसिंग दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च समथिंग्स डिफरेंस एज वी आर वर्किंग ऑन इट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मतलब कि एज वी वर डिस्कसिंग कंटिन्यूसली रिगार्डिंग दी थॉट इंडिया, एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म्स वेयर वी विल ट्राई टू come up with the different types of courses, different types of videos, different types of AI tools, and because in today's eras, the way we are growing, and we are growing at a faster rate, and this is the most important things for us and our young minds and students, and as a citizens of in India, that we should be proud of ourselves that we are growing as a faster rate. So this is the most important things. We need to develop ourselves, we need to improve our skills, we need to do the innovations in the technologies, in the softwares, and this all will help us to grow as a human being also, and as a Indian citizens also. And that is not a one day game, we need a time, we need to work on it, and I hope many of us young minds are working on it, and they have done a very wonderful job, and I appreciate them and I congratulate them, and I believe that in near futures also they will do a lot of good jobs, and because and I believe that they will maybe succeed in his life, and बस यही कह सकता हूँ, और क्या ही कहूँ, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मतलब कि वक्त उसी के लिए है जो वक्त को वक्त समझता है। तो डैट मीन्स क्या है कि यू नीड टू गिव द टाइम, आपको वक्त देना पड़ेगा।
समझे ना, मतलब कि समय समय मांगती है, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम नीड्स टाइम। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इफ यू आर डूइंग एनी थिंग्स एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू कैन गेट अ रिजल्ट इन 1 day or 2 day or 3 day in a week or in a month, that's not possible. Might be or not too much lucky, but if you have the wills, if you do a hard work, you do a lot of hard works, then there is a definitely 110% chances that you will succeed in his or her goals what you are working for at. So can never lose hope, because see, you might get distracted, by seeing your neighbors, by seeing in the societies that they got that they got their dream jobs, dream cars, dream businesses in a few months, and you are working from last 2 years 3 years but you are not getting it. That doesn't mean you don't have the qualities. Might be sometimes you are put in test mode, that how much you can uh, handle that pressures, and that is the most important things, because uh, वही इंसान दुनिया में सबसे आगे जाता है जो सबसे ज़्यादा प्रेशर को झेलने की मतलब कि क्षमता रखता है। तो वो चीज़ें होती है, और दिस डजेंट कम्स इन 1 day, मतलब कि एक ही दिन में ये चीज़ नहीं आ जाती। इफ़ यू आर practicing on some things continuous basis, on a continuous basis, on a regular basis, then it will slowly and gradually it will develop in between in you, and this is the way you have you work it। and so ये चीज़ें होते हैं, मतलब कि कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। बट द थिंग इज़ डैट यदि मैं मेहनत ही ना करूँ, ये तो भाई ये सही बात नहीं है। बट वी नीड टू नेवर लूज होप, मतलब कि हम लोग को मेहनत करना है, मतलब कि कोई चीज़ को पाने के लिए अपना जितना वी कैन डू इट, वी विल ट्राई टू आवर बेस्ट टू डू डैट, एंड कि ये चीज़ें हो जाते हैं। एंड मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब कि वी वोंट बी एबल टू डू इट, एंड ऐसे नहीं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं यार, क्या नहीं कर पाएंगे यार, यदि हम इंसान चाह ले तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। एंड वी आर द लाइव एग्जांपल्स कि हम लोग नहीं, मतलब कि दुनिया में जितने भी मतलब कि आविष्कार हो गए हैं, जैसे एरोप्लेन हो गए, जितने भी मतलब कि पदार्थ हो गए, मतलब कि आर्टिकल्स हो गए, मतलब कि कुछ भी चीज़ें आप दुनिया में उठा के देख लो तो हम ही इंसान ने बनाया है। तो मतलब कि कहते हैं ना कि एक वक्त आएगा इंसान अपने आविष्कार से ही हार जाएगा। मतलब किसी मतलब कि एक अच्छे कवि का लिखा हुआ था, मेरे को पूरी लाइन है, पर आविष्कार से ही हार जाएगा, मतलब कि इंसान जो बना रहा है उसी से ही हार रहा है। डैट मीन्स का द मोर यू डेवलप द थिंग्स एंड द मोर, क्योंकि सभी के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी तो होते हैं। तो डैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। और ये क्या है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये चीज़ एक दिन में समझ में नहीं आती, यू नीड अ टाइम। और वो टाइम क्या है कि कोई चीज़ के लिए आप वक्त लगाओगे ना तो कुछ ना कुछ तो आपको हासिल हो जाएगा। कहते हैं ना कि मतलब कि कुछ ना होगा ज़िंदगी में तो क्या, तजुर्बा तो ज़रूर होगा। तो डैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो एक तजुर्बा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड कि यही सब चीज़ें हैं, मतलब कि आने वाले वक्त में हमारे देश में बहुत कुछ बदलने वाली है। डैट मीन्स वी आर बिकमिंग इन एजुकेशन सिस्टम वाइज, एज अ टेक्नोलॉजी वाइज, मतलब कि एंड इंडिया इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, एंड दैट इज द गुड फॉर आवर सोसाइटीज एंड दैट इज गुड फॉर आवर नेशंस ऑल्सो। And as a Indian citizens, we are very proud of our country and we love our country very much. And each and everyone loves the country very much. And we are so much proud of our country because our country has done a lot of new things. As we have set as we have already set a standard in the cricket, and as you know that how much cricket is loving in India, and not in India, all over the world they love the Indian cricket BCCI, and so that is the base we have set. We can see also that that is the parameter, so that is the example we have set in the society or in the world. And because see, when I am talking about IPL, a lot of peoples from all over the world they registered themselves in this IPLs. And they came here to play, and they stayed here for 2 months, and that's not an easy job. So, and it's a commendable. And see, no one has thought that when IPL was introduced, it will become so much successful, but it take times now. That is the most important things.
we can take a lessons from IPL also. Like it doesn't means that when the chairman organized this, or when the committee organized this IPL, they haven't thought at that time that this will become a this much bigger and this much a bigger platform. So this is the most important things. मतलब कि we should never lose hope, and we should always try our best as much as we can, because see as a last day, if we are working as a team, if we are working with the leaders, and if we are listening to leaders, if we have some questions we are asking to leaders, yeah, and we are suggesting them, we can do this, we can do that. So if we are interacting both way, and leader is also leading you, and leader is also listening to you, what should we implement so that it can become a better one. So if there is a two-way conversation, that means that project or that particular things is going to be succeed. Because see, okay, when we are working as a team, there is 110% chances that that we get success in this project on that project. So that is the most important things, and that is the same things we are trying to implement in the Thought India also. Because we are working as a team, because as an individual you will not be able to go too far, but while working as a teams, there is 110% chances that you will crack the formulas to get success in those categories, and to implement better. And you know that we need to work hard on it, and because we just think about some things and you can achieve those, and that is not a cup of cake that you will eat. You need to work for it, and this is the life. And the life, if it's a straight highway, then yeah, you will not be feel so much excited to ride. But if sometimes it will give uneven roads, at that times you need to be precautions, you need to be too much attentions while driving, that you can get an uneven roads in the pathway. So for that you have to ready from the right now only. So that is the most important thing. Say, you might get sometimes success, you might be fail sometimes, that again you have to learn it, and again you have to come back, and again have to restart. So that is the most important things. And most of us guys in today's generations, or you can say Gen Zs or young minds, are uh, very less are there that they follow these paths. And I'm also trying it. I'm not saying that I am perfect, but I'm trying my level best that I can develop as much as I can, and I'm trying my best. And because see, um, I always say, do the things which you like the most, in which you can give your 110%. So that is the most important things. But we as a humans, we need sometimes to analyze some things, because I know that there are many subscribers on my channels who might does not have any mentors. उसके पास कोई मेंटोर्स नहीं है, वो चीज़ कैसे करना है नहीं करना है, तो वो चीज़ें होते हैं। मतलब तो जैसे क्या कि अब कहूँ भी ट्यूशन्स पढ़ते हो उनसे सीखो, मतलब कि कोई आपके टीचर्स उनसे सीखो, कोई आपके भैया उनसे सीखो। तो सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी वंस, उसके मतलब कि एक्सपीरियंस से मतलब आप सीखने की कोशिश करो। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एज वी कैन लर्न एज अ ह्यूमन बींग. So this all about the today's sessions, and I hope you like the videos, and please don't forget to share my channels, because we are also trying our little best to analyze the things, and to to convert as a video, as to present in front of you all. So I hope you like this video. Take care. Bye bye. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye.